दूसरी बात यह है कि मैं जो हम लोग यहाँ इधर यानी मगरब में आप बसे हैं, हमारा मुझे ये ख्याल है कि एक फ़र्ज़ ये भी बनता है कि हम अपने बड़े शुआरा को यानी मगरबी दुनिया की दूसरी ज़बानों में और दूसरी ज़बानें बोलने वाले लोगों में भी इंट्रोड्यूस करें। इस सिलसिले में मतलब आप देखिए तो हमारी जो कम्युनिटी है, अदबी कम्युनिटी, पिछली कई जनरेशन से दूसरे लोगों की निस्बत, जैसे लातीनी अमेरिका के शुअरा और उदबा को जिस तरीके से अंग्रेज़ी के अंदर और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारफ़ कराया गया है, तो इस तरह से हम नहीं करवा सके। तो इस सब चीज़ के पेश नज़र मैंने फराज साहिब के ऊपर कुछ अंग्रेज़ी में लिखना शुरू किया है। आहिस्ता आहिस्ता किताब बन जाएगी, तो उसमें से मैं आपको कुछ यानी पीसेस सुनाना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त से। टाइटल जो है वो इसका अहमद फराज, द नाइटिंगेल ऑफ द हिल्स। मैं उन्हें आज बुलबुले कोहसार के नाम से याद करना चाहूँगा। Ahmad Faraz, the Nightingale of the Hills, is buried in Islamabad, all right, but who could ever bury Faraz Sahib's ideas and aesthetic exuberance? Our heartless establishment of the day ignored his last rites in 2008, though the people did not. The establishment ostrich buried its head in the sand once again. The then high and mighty were not reported to be in attendance of the funeral rites of the great son of Pakistan. However, Faraz Sahib's aesthetic presence shines eternal and can never be detracted from by anyone's pettiness. The man was like a flowing wave of aesthetics, surging with pleasure of love and love of life. In poetry, in life, and in politics, his eternal motivation was love. Love of the beautiful, love of the natural, and love of the people and the motherland. How can the glory and glow of this overflowing love be overshadowed by the pettiness of political self-importance? But let us celebrate the man for what he was for generations of his countrymen and what he is bound to remain for generations to come. His poetry and persona were and are both unique and very similar indeed. The way he disciplined his creative energy in his remarkably lucid verse was a straightforward reflection of his deep inner vitality, which he kept under control through a rather deceptive casualness of demeanor and comport. However, neither Faraz Sahib's poetry nor he himself was simple. In fact, he instinctively understood the deepest intricacies of human psychology, and that is what gave his verse the power to grip the minds of successive generations in South Asia and throughout the world. This deceptive simplicity of his poetry has kept many of his detractors from grasping the psychological depths that his literary work could touch. But the greatest of his contemporary writers like Faiz Ahmad Faiz and Ahmed Nadeem Qasmi, for example, and a host of others, understood and appreciated the relationship between his ever-growing popularity among the people and his deep grasp of human psychology, expressed with great ease in apparently simple terms. This level of artistic command was achieved by him through rigorous linguistic discipline and mastery of the great tradition of Urdu and Persian literature. Nobody should remain under the illusion that Faraz Sahib's poetry lacks intellectual depth. The depth is there, but it can be uncovered only after one trains oneself to the poet's level of artistic sophistication. His verse does not display its psychological insight on its surface. It carries them in their heart. Now,
Love is what Faraz used as a common thread for addressing the deepest yearnings of human soul in relation to one's person as well as in relation to one's society and motherland. This connects him with Ghalib and Faiz just as it connects him with Hafiz, Benaziri and Naziri and Badri. This type of poets is known to understand man's existential situation in the world through the experience of love. They take this experience and bring it to bear on issues of morality and social justice, glories of all that is beautiful and sublime in the universe, and challenges that weigh on our hearts in the form of human limitations. Let us look at some examples. ए खुदा जो भी मुझे बंदिश के बाई दे उसकी आंखों को मेरे जख्म की गहराई। Oh Lord, I'm not going to bother you with translations because we understand English, but just a couple of couplets, their translation in English. Oh Lord, any who exalts me patience, give him the depth of insight commensurate with the depth of my heart's wound. And then गलियों में कैसा शोर था, हलचल सी क्यों मख्तल में थी, क्या वस्फ उस शाहिर में था, क्या बात उस पागल में थी. What was this clamor in the streets and why was this commotion in the slaughtering arena? This poet being dragged to death must have been very special one, unique in his insane visions. सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है मकीन उधर की भी चल रहे इधर के देखते. We hear that paradise is adjacent to her nightly abode. The dwellers therein are also beholden to her epiphanies. ज़ब्त लाज़िम है मगर दुख है क़यामत का फराज. ज़ालिम अब के भी न रोएगा तो मर जाएगा. And now, of course, Faraz Saab has written a sizable amount of direct resistance poetry, whose apex expression is in his famous poem Muhasara or The Siege. But there are many other poems, which are basically resistance poetry. For example, Shehrnama, Karge Kuch Kahan, अभी हम खूबसूरत हैं, वो लम्हे कितने दरो के गो थे, ए मेरे वतन के खुश नवाओ, ए मेरे सारे लोगों, नामे जाना, वियतनाम, सलामती कौंसिल, etc., etc. Now, in these resistance poems, there's a lot that needs. Muhasara is very famous, and you guys know about that. But the rest of the poems are also, written with great artistic skill. Look at this piece from Shehrnama. मेरे पास वहाँ मेरे नक्बज़न, मेरा मुल्क मिलके यतीम है. मेरे पास वहाँ मेरे नक्बज़न, मेरा मुल्क मिलके यतीम है. मेरा देश मीरे सिपाह का, मेरा शहर माले गनीम. क्या बात. और फिर करगे कूच कहाँ में कहते हैं, सर किसी का भी दिखाई नहीं देता है यहाँ, जिस्म ही जिस्म है, दस्तारें ही दस्तारें हैं. और तू किसी करिए जिंदा में है शायद के जहां, तोक ही तोक हैं, दीवारें ही दीवारें. और ए मेरे वतन के खुशनवाओं से चंद लाइन्स ये देखिए. एक उम्र से अदलो सिद्क की लाश गासिब की सलीब पर जड़ी है. इस वक्त भी तुम गजल सरा हो, जब जुल्म की हर घड़ी कड़ी है. और जंगल पे लपक रहे हैं शोले, ताऊस को रक्स की बड़ी है. जंगल पे लपक रहे हैं शोले, ताऊस को रक्स की बड़ी है. और एक
it bears mentioning that Faraz Sahib's art stood for love and justice for the entire humanity. His translations from resistance poetry of South Africa under the title Sab Aawazein Meri Hain is a testament to universality of his creative imagination in its pursuit of justice and love for all. In the introduction to this book, he emphasizes the responsibilities of writers in grave historical situations where people are being oppressed and where they are giving their lives for their human rights. He also underlines the similarities between violations of human rights in South Africa with such violations in Pakistan. He is not with us today, but I am sure he would have been deeply shocked by the fact that apartheid practiced by the whites in South Africa has not come to an end, but is still being practiced in Palestine by Israel and has been expanded into a genocide with the full support of the weapons and intelligence and the intelligence services of the leading Western powers like the US, UK, France and Germany, who do not consider Palestinian lives as equivalent to those of their own presumed race. Now, Faraz Sahib, look at this. He wrote this poem, Abu Jihad, and look at its prophetic, intuitive insights. He says Abu Jihad is actually the title for Yasser Arafat. Decades ago, he said, Abu Jihad, mera dil lahu lahu hai magar muaf karke tere dushmanon ke saath hain hum. Abu Jihad, मेरा दिल लहू लहू है मगर मुआफ करके तेरे दुश्मनों के साथ हैं हम और तेरा जुनू तेरा एसार मोहतरम लेकिन जो सच कहूँ तो तेरे कातिलों के साथ हैं हम और हम ही तो हैं वो सितमगर कि मुसलिहत जिनकी दराज दस्ती कातिल का दिल बढ़ाती है हम ही तो हैं वो सितमगर कि मुसलिहत जिनकी दराज दस्ती कातिल का दिल बढ़ाती है और हम उस कबीला हुशाक से नहीं कि जिन्हें नदीम दोस्त से खुशबुए दोस्त आती है. South African poetry that he translated is heart-wrenching. The poem on Mandela, just a brief piece from it. Mandela, sirf 466/64, that was the number of Mandela as a prisoner. 466/64, जो इस जजीरे की जमीन पर कल्बा रानी और रविशें साफ करता है. मगर मंडेला तुम एक कुव्वत हो, एक इस्तिकामत हो और अपने बेटों की शरियानों में जारी हो सारी हो. और फिर एक दूसरी नज्म का ये टुकड़ा देखें कि ये जो अपार्थाइड को सपोर्ट करने वाली कौमें हैं, वो कहते हैं बाआबरू शायरी करो जिनसे उनकी सफाकियां खुशनुमा लगें और मकरू मंजर तस्वीर दिखाई दें और गलीज आंतें रोशनी की लकीरें नजर आएं और खून को शराब और मौत को नींद से ताबीर करो. वो शायर से फूलों के हार मांगते हैं ताकि उनकी गोलियों से छलनी होने वालों की कब्रें सजाई जा सके. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. Now I'm coming to his ghazals and then I close. His ghazals are a great expression of the deepest of human feelings and emotions. The overflow of emotion in ghazal verses makes Faraz Sahib a romantic poet as per the Hegelian definition of romanticism. However, I personally believe that emotions expressed in his ghazals, though personalized, relate with universal existential drives and setbacks of humanity. एहतियात ए एले मोहब्बत कि इसी शहर में लोग, एहतियात ए एले मोहब्बत कि इसी शहर में लोग गुल बदस्त आते हैं पाब रसन जाते. और जब सबके दिलों में घर करे तू, फिर क्यों हमें दर बदर करे तू. और दूर देशों से काले कोसों से कोई आवाज आ रही अभी. और देख, ये गजल के इशारे, देख पिंदार उन आशुफ्ता सरों का कि जिन्हें
बख्त मंसूर मिला, तख्त सिकंदर न मिला। और फराज इस शहर में किसको दिखाऊं जख्म अपने, फराज इस शहर में किसको दिखाऊं जख्म अपने। यहाँ तो हर कोई मुझसा बदन पहने हुए है, और जोरे हबीबो पुरसशे अगयार एक से। गो जख्म अलग अलग हैं मगर वार एक से। These couplets are in ghazal. So ghazal is also basically, full of revolutionary desire for social justice for all. Now, Faraz Sahib's in-depth and multi-dimensional description of the beloved are legendary. However, despite appearing only personal, they are dedicated to capturing the very essence of beauty through the charm and grandeur of human form. जुल्फ को हम सरी का दावा था, फिर भी खुशकामती ज़्यादा थी। और सर पर पैरने गुल भी सजे खूब, मगर यार की कामत ज़ेबा पे कबा और लगी। और वो सर्फ कद है मगर बेगुले मुराद नहीं। इस शजर पे शगुफे समर के देखते हैं, और फिर तेरे ही तल्लतो बेसू की। This is from one of his कसीदस। तेरे ही तल्लतो गेसू की धूप छाँव से छाँव है, कहाँ की सुबह बनारस, कहाँ की शाम अवध। और these couplets, फरोगे हुस्न से खीरा थी आंखें, सो अब्रे जुल्फ ने चिलमन गिराई। और तेरी आंखों के आगे कब से नरगिस खड़ी है लेके कशकोले गदाई। और निशाते वस्ल में हैं तितलियां मस्त, धुला सब्जे से जंगारे जुदाई। And this last couplet from his Qasida Manuto, which is basically, this Qasida is basically a praise of qalam, a symbol of creative writing. He says, किसी बहार शमाइल की बात करके बने, किसी बहार शमाइल की बात करके बने, हर एक हर्फ शगुफा, हर एक लफ्ज कमल। These and many of his delicately rendered tributes to human form and its sublime beauty are actually a direct manifestation of the eternal link between love and beauty. Faraz is all love, and love revolves only around the sublimely beautiful, which resists any distortions by injustice and oppression. Hence, his love of beauty is simultaneously love of justice for all. His poetry stands on two pillars, love and justice. Thank you, ladies and gentlemen.